Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is about pollution of air and water. It is the chapter 13 of your subject science. And this chapter is divided into two parts. पहले हमें एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है. तो एयर पोल्यूशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एयर क्या है. व्हाट एयर इज. एयर इज बेसिकली द mixture of gases, or you can state that it is the homogeneous mixture of gases. The gases which are present in air will be 78% nitrogen, it is 21% oxygen, it is carbon dioxide, CO2 is about 0.003%, 30%, and other gases are there. There are presence of noble gases, but these noble gases are present in traces. They are present in minute quantity, very little quantity. Among all these gases, oxygen and nitrogen are most predominant and are most useful. Oxygen causes combustion, or we can say it causes burning. It also causes oxidation of food in our body by a process called respiration. Besides this, the breathing rate that continues in our body because of this oxygen. Nitrogen, it is taken by plants in the form of nitrates, nitrites, ammonia, or in the form of fertilizers. Carbon dioxide gas, its concentration is 0.03%, but nowadays the concentration is increasing at an alarming rate. And why it is increasing? Because of this pollution of air. And this pollution of air is caused by many human activities, due to which there is a sharp increase in the concentration of carbon dioxide, and this increase in carbon dioxide level has caused global warming, or we can say it has caused greenhouse effect. First of all, we will know what air pollution is. Air pollution. तो अभी हमने ये देखा कि एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ इनर्ट गैस हैं. इसके अलावा वाटर वेपर्स भी है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वेपर्स भी हैं, ये भी काफी कम है. अगर इन सबस्टेंस के बगैर एयर में किसी और सबस्टेंस की एंट्री हो जाएगी तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं. या हम ऐसे भी लिखेंगे, द एंट्री ऑफ और द मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड substances or unwanted chemicals with air is called as air pollution. It is the simple definition, very simple definition. Or it can also be defined as the change in physical, chemical, and biological properties of air is called air pollution, or the addition of undue and unwanted substances to the air, due to which there is change in the physical and chemical properties of air, is called as air pollution. एक डेफिनेशन मैंने ये बताई कि
آئر جو ہے اس کی فزیکل پراپرٹی چینج ہوگی. فار ایگزامپل آئر کا کلر ہم دیکھتے ہیں کہ آئر اٹ از ٹرانسپیرنٹ, مگر کبھی کبھار اس آئر کا کلر چینج ہوتا ہے, اس میں ڈسٹ کافی جمع ہوتی ہے, اس میں کاربن موناکسائڈ, سموک, اسماگ, فوٹو کیمیکل اسماگ وہ اس میں جمع ہوتا ہے. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, ہم اس کو آئر پولوشن کہتے ہیں, کیونکہ آئر کے ساتھ جو سبسٹینس ایڈ ہو گئی یہ انوانٹیڈ ہے, اس کی وجہ سے اس کی فزیکل پراپرٹی چینج ہو گئی. کیمیکل جو اسماگ ہے یا جو سموک ہے, سموک اس کو ہم کاربن موناکسائڈ کہتے ہیں, کاربن موناکسائڈ یا سلفر ڈائی آکسائڈ یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ, ایسے کیمیکلز, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایئر کی جو کیمیکل پراپرٹیز ہیں وہ چینج ہوگی. وی کانٹ اٹ از انیبل ٹو بریتھ ڈیورنگ دیز سرکمسٹانسز اگر انوانٹیڈ سبسٹینسز ایئر میں پہنچیں گے. اس طریقے سے بایولوجیکل پراپرٹی اس ایئر میں ایک کچھ کانسٹیٹوئنٹس ہے. فار ایگزامپل کاربن موناکسائڈ اٹ از ٹیکن بائی پلانٹس فار فوٹوسینتھسس پروسیس. Oxygen it is taken by animals mostly, including not mostly including humans, and nitrogen is taken by plants in the form of nitrates. Then with the addition of these unwanted substances there will occur a change in their biological property. They till now they were meant for the survival of life. Now they will cause destruction of life. This is called the change in the biological property. Now we will see what are the reasons for the pollution of this air. What are the reasons? And the substances that causes this air pollution are called as air pollutants. Pollutants are air pollutants. What are the reasons? کون سے ایسے ریزن ہے جو کہ جس سے کہ ایئر پولوشن ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے جو پہلا کاز ہے وہ ہے آٹو موبائلز. آٹو موبائلز جو دا رننگ آف آٹو موبائلز میں کیا ہے, مطلب فیولز ہے, فیول استعمال ہوتا ہے. تو جب بھی کمبسٹن اس فیول کی ہوتی ہے تو انوانٹیڈ سبسٹینس ایکچولی اس ایئر میں پہنچتی ہے. انوانٹیڈ سبسٹینس لائک کاربن موناکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ, نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. These automobiles are the main cause of this air pollution. Next is there, اگر ہم دیکھیں گے انڈسٹریز اینڈ فیکٹریز. جو کہ انڈسٹریز اینڈ فیکٹریز ہیں وہاں سے جو بھی ڈسٹ نکلتی ہے, ایشز نکلتے ہیں, انوانٹیڈ سبسٹینس نکلتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ایئر پلوٹ ہوتے ہیں. لائک سیمنٹ انڈسٹری ہے, سیمنٹ فیکٹری ہے, آئل فیکٹریز ہے, آئل ریفائنریز ہے, یہ جو ساری پیپر فیکٹری ہے, پیپر انڈسٹری ہے, اسٹیل انڈسٹری ہے, آئرن انڈسٹری ہے, یہ ساری ایسی فیکٹریز ہیں جن سے جو آئر ہے یہ کیا ہوتا ہے, یہ پلوٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے کبھی کبھار جنگلوں میں آگ لگتی ہے, فارسٹ فائر. یہ فارسٹ فائر یا تو کوئی کسی سوشل ایلیمنٹ کی وجہ سے لگتی ہے یا یہ نیچرلی لگتی ہے, جیسے کہ امریکہ کے جنگلوں میں کبھی آگ لگتی ہے, کیلیفورنیا کے جنگلوں میں, آسٹریلیا کے جنگلوں میں. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ جو ایش ہے وہ پورا کہاں جاتا ہے, وہ ایئر میں جمع ہوتا ہے. اس کے علاوہ volcanic eruptions, کسی جگہ کوئی والکانو یہ باہر نکلتا ہے, and it does not come alone, it comes with impurity, with dust, with ash, with other unwanted substances that cause air pollution. Besides this, jet aeroplanes, or we have freezers or refrigerators, they use certain chemicals like those chemicals are usually called as aerosols. They release certain chemicals called aerosols. ان میں کچھ
केमिकल्स यूज होते हैं लाइक CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है कि इनकी जो कंबस्शन है वो पूरी तरीके से नहीं होती है, तो वहां पे जो सबस्टेंस निकलते हैं वो एक्चुअली काफी देर तक हवा में फिर सस्पेंड रहते हैं, उनको हम एरोसॉल्स कहते हैं, और यही एरोसॉल्स क्या करते हैं, दे आल्सो कॉज एयर पोल्यूशन। और इस एयर पोल्यूशन से क्या होता है कि काफी मॉन्यूमेंट्स जो है उनको नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? बिकॉज ऑफ एसिड रेन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब भी ये हवा में सस्पेंड होते हैं, ये ऊपर जाते हैं टू द अपर एटमॉस्फेयर, वहां पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके क्या बनता है, ये एसिड्स बनाते हैं, फिर यही बारिश के साथ नीचे आते हैं, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन की वजह से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज सल्फर डाइऑक्साइड, देन इट कम्स when it combines with water droplets, it results in formation of sulfurous acid, or it can be sulfur trioxide, it can form sulfuric acid, or NO2, it combines with water, it results in the formation of HNO3, nitric acid. This nitric acid comes along with rain, that's called as acid rain. इससे क्या होता है कि कुछ मॉन्यूमेंट्स है, लाइक ताजमहल है, ताजमहल, क्योंकि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, और आगरा में काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, जिनको बाद में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से उनको वहां से हटाया गया। तो इससे क्या होता है कि इन फैक्ट्री से काफी ज्यादा अनवांटेड सब्सटेंस जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कहाँ जाते हैं, एयर में जाते हैं, वहां ये वाटर के साथ मिलके एसिड बनाते हैं, फिर ये बारिश के साथ नीचे आते हैं, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो ताजमहल की जो ब्यूटी है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है इससे। या जो सॉइल होती है, सॉइल की जो ऊपर वाली सतह होती है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस दैट इज रिच इन मिनरल्स और दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो वहां पे एक्चुअली दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग। तो जब भी एसिड रेन वहां नीचे आती है, नीचे आते जमीन पे पड़ते हैं, तो वो जो पानी के साथ वो न्यूट्रिएंट्स या वो जो मिनरल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं एसिड रेन के साथ। तो ऊपर जो सतह है उस पर क्या जमा होता है, उस पर एसिड जमा होता है। इससे क्या होता है, जो सॉइल का जो पीएच है वो एसिडिक बनता है, तो जो सॉइल है ये बंजर बनती है, तो इस पे किसी किस्म की जो फसल है वो उगती नहीं है। दैट आल्सो दिस एसिड रेन, दिस आल्सो कॉजेज हैवक ऑन बोथ ऑन मॉन्यूमेंट्स एज वेल एज ऑन द earth's top layer, that is crust. Besides this, there is accumulation of certain gases like methane gas. For example, कुछ फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक CNG या LPG, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता इनके इस्तेमाल के लिए जो हमारे पास जो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, वो वहां पे एक्चुअली कंबशन अच्छे से नहीं होती है, तो इस वजह से कुछ गैसेस जमा होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम सर्टेन अदर गैसेस कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। इससे क्या होता है कि जो जमीन का जो टेम्परेचर है ये काफी ज्यादा होता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एंड दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज the increase in the temperature on the earth's surface, जिसकी वजह से जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है it gets disturbed somehow by this particular by these particular gases, and this increase in this greenhouse effect also causes global warming. That is a matter of global discussion. And this global warming, it will result in the melting of glaciers, due to which there will be increase in the water level of oceans and seas. That will be very much havoc. That will cause havoc for for coastal countries, and even with the progress of time, they can get submerged into the water. So this was about this air pollution, about the factors which cause air pollution. Now
In tomorrow's lecture, we will discuss how we can control this air pollution. Till then, it is goodbye from my side.